Assalamualaikum student. Today we will continue our chapter globe and map, and here we are on page number 42, and today we will learn about the locating place with the help of latitude and longitude. Most of the atlases and wall map have lines of latitude and longitude to locate a place. बहुत से ऐसे एटलसिस मैप एंड वॉल मैप हैं जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं टू लोकेट एनी प्लेस. These lines serve as a grid system. Now here we are discussing about the latitude and longitude, and you all know very well the lines of latitude and longitude because we were learn all these things in class 5. So let's repeat it. Lines of latitude. The lines of latitude are the lines that run from east to west on a globe. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड वो लाइन्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव कर रही होती हैं ऑन अ ग्लोब एंड सर्व एज अ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स, और उन्हें हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स भी कहा जाता है. एज यू कैन सीन ऑन दिस पिक्चर, दीज लाइन्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स मीन्स लैटिट्यूड. देयर आर 180 लैटिट्यूड्स, टोटल 180 लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, बट 90 line in the northern hemisphere means the upper part of the equator, which is northern hemisphere, which contain 90 lines, and the 90 line in the southern hemisphere means the lower part of the equator also contains 90 lines of the latitude line. When we equal the both lines means 90 plus 90, it's become 180, means total horizontal lines we have 180, but when we divided the earth into two parts, which is northern hemisphere and now southern hemisphere, that northern hemisphere contain 90 lines and the southern hemisphere also contain the 90 lines. The lines of the latitude which divide the earth in the northern and southern hemisphere, ये जो लाइन है लैटिट्यूड की वर्थ को डिवाइड कर देती है नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में, नॉन एज इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड. नाउ here we have also a horizontal line on the center of the earth, and that line we called equator, which divide the earth into two parts, means northern hemisphere and the southern hemisphere. Okay, now you know that what is latitude. Now move on longitude. These lines are drawn run from north to south on the globe. ये वो लाइन्स हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करती हैं ग्लोब में, एंड दिस लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल लाइन्स लाइक दीज लाइन्स. ओके, these lines are called vertical. There are total 360 longitude on the globe. Total 360 lines है longitude की on a globe. These lines are measured east or west of the prime meridian or 0 degree or Greenwich meridian with 0. Okay, now these lines को मेजर किया जाता है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, एंड द सेंटर लाइन लाइक दिस लाइन विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू पार्ट मीन्स east to west. This line which break the earth into two part, that line is called prime meridian, means 0 degree, or the Greenwich meridian also. Passes through the Greenwich England, जो कि Greenwich England की तरफ से पास हो रही है. There are 180 lines of the longitude east. 180 line in the longitude अगर east में है, like from this area, so same 180 line आपको west में भी मिलेंगी, और ये दोनों lines मिलकर हमारी बनती हैं 360 line of longitude. Now we will learn today that what is the line of latitude and what is the line of longitude. We will continue this chapter on our next video. Till then, read this chapter carefully, and here we stop it. Thank you.